welcome distinguished delegates who have joined us from different parts of the country. माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हमें बलिदानियों स्वतंत्रता सेनानियों की तरह देश के लिए न्यौछावर होने का सौभाग्य भले ही न प्राप्त हुआ हो, पर हम देश के लिए मरकर नहीं तो जीकर तो दिखा सकते हैं। बीईई भी भारत की सेवा में रत है, एनर्जी एफिशिएंसी तथा कंजर्वेशन के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और इसके लिए लाइट टावर की तरह जागरूकता की रोशनी जगमगा रहा है बीईई, ताकि हम हमारे बहुमूल्य संसाधनों को प्रिजर्व कर सकें, जलवायु परिवर्तन को बचाने की विश्व मुहिम तथा सस्टेनेबल लाइफ को प्रमोट करने का न्यू इंडिया का प्रण सुदृढ़ कर सकें, उसे साकार कर सकें। आइए हम सब प्रण करते हैं कि हर जन एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बचाएगा। ऊर्जा सृष्टि की रचना का स्रोत, ऊर्जा मानव सभ्यता की सबसे बड़ी खोज। घर, अस्पताल, उद्योग, कारखाना, यातायात, हम सभी किसी न किसी ऊर्जा शक्ति पर निर्भर हैं। ऊर्जा हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं, लेकिन क्या हम इस वरदान का महत्व समझ पाए? क्या हम ऊर्जा का सही ढंग से उपयोग कर रहे हैं? जरा सोच कर देखिए, क्या हो जब 135 करोड़ देशवासी मिलकर ऊर्जा बचाएं और आजादी की 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में देश को आत्मनिर्भर व ऊर्जा सुरक्षित राष्ट्र बनाने में सहयोग दें। तो चलिए रोज थोड़ी थोड़ी ऊर्जा बचाते हैं और देश के कोने कोने तक ऊर्जा पहुंचाते हैं। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, हमारा प्रण ऊर्जा संरक्षण। देश भर और दुनिया भर में उजियारे विश्वास को एक दिन दिव्य बनाकर तोड़फाड़ों के इतिहास को। May I now invite Shri Vivek Kumar Devangan, Additional Secretary, Ministry of Power, to kindly deliver the resolution. The National Energy Conservation Day is celebrated on 14 December every year since 1991. On the occasion of 21st National Energy Conservation Day, I have the privilege to welcome Honorable Minister for Power, New and Renewable Energy, Shri R.K. Singh, who has led from the front in making India as the only country among the G20 nations who has been able to achieve its energy conservation and energy efficiency goals as committed in the Paris Agreement. It's my honor to welcome Shri Krishna Palji, Honorable Minister State for Power and Heavy Industries, who has been guiding us how to electrify our economy and vigorously following electric vehicle ecosystem in the country, as he is also looking after the Ministry of Heavy Industries. I would like to welcome Secretary Power, Shri Alok Kumar Ji, who has really brought a paradigm shift in the approach of Ministry of Power to steer the agenda of energy transition, including a number of path-breaking initiatives to meet our enhanced commitment given at Glasgow during 26th Conference of Parties. I welcome my colleagues on the dais, Shri Abhay Bakri, Director General of Bureau of Energy Efficiency, all the dignitaries, all the CMDs from various PSUs, all the officials from Ministry of Power, all the distinguished guests from state government, from the industry, awardees and media personnel who are present here. I am extremely delighted to welcome all of you on this auspicious day of National Energy Conservation Award 2021, where we give national recognition through awards to innovative ideas, industries and establishments who have taken a special effort to build energy consumption while maintaining their production. I would like to congratulate the award winners from industry, building sector, manufacturers of green star
labeled appliances and other establishments for their exemplary efforts in the field of energy conservation and energy efficiency. We take particular pride in congratulating school children who, despite these challenging times, have participated in the painting competition and depicted their imaginative and creative thoughts through the beautiful painting. Bureau of Energy Efficiency has spearheaded the country's initiative for horizontal and vertical percolation of energy efficiency on various levels in India. Several innovative energy efficiency mechanisms and national programs have been successfully designed and implemented, like the Perform Achievement Rate, that is PAT scheme, standardized lending program for energy efficient appliances, Ujala for households, street lighting national program, energy conservation building code, etc. As on November 21, these endeavors have resulted in total energy savings of about 29.28 million ton of oil equivalent, that is about 3.15% of total primary energy supply of the country. I would like to acknowledge the contribution of all bilateral and multilateral partners of Bureau of Energy Efficiency, energy auditors, industry associations, building professionals, energy intensive industries and establishments, manufacturers of energy efficient appliances, among others, towards facilitating in achieving such huge energy savings. On the occasion of National Energy Conservation Day 2021, Convergence Energy Services Limited, a wholly owned subsidiary of Energy Efficient Services Limited, will be expanding their flagship Gram Ujala program. Under this initiative, I am happy to announce that a total of 1 million LED bulbs are being distributed towards today across 2,579 villages in 5 states: Uttar Pradesh, Bihar, Telangana, Andhra Pradesh and Karnataka. This is likely to result in energy saving of about 141 million units, with a cost saving about 56.58 crores and annual carbon dioxide emission reduction of about 1.538 million tons. I would also like to mention that today we shall be releasing net zero building, that is Shunya rating plans on voluntary basis, guidebook on awareness generation on energy efficient building and thermal comfort, and cloud data analytical tools for small and micro enterprises. All of us will have to join hands and work in unison to make India an energy efficient economy and society. We need to make conscious efforts to embrace energy efficient practices and products in our homes, offices and industries. I once again welcome all of you on the occasion of National Energy Conservation Day. Thank you. थैंक यू सो मच। और अब BEE एनर्जी एफिशिएंसी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने जा रहा है, एक नई इबादत जोड़ने जा रहा है, नई सौगातों की शुरुआत आज होने जा रही है। हम माननीय मंत्री श्री आर के सिंह जी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि हाई एनर्जी लिथियम आयन ट्रैक्शन बैटरी पैक सिस्टम के लिए स्टार लेबलिंग प्रोग्राम का शुभारंभ करें। धन्यवाद माननीय। आपसे निवेदन है कृपया यात्री कार, लाइट मीडियम कमर्शियल तथा हेवी ड्यूटी वाहनों के टायर की स्टार रेटिंग का भी शुभारंभ करें। It is expected to save 2.27 mmT HFD and 1.04 mmT petrol annually and reduction of approximately 10.1 mmT. माननीय, अब कृपया प्रमोटिंग नेट जीरो बिल्डिंग शून्य रेटिंग प्लान को भी लॉन्च करें। शून्य लेबलिंग प्रोग्राम will encourage the building owners and promoters to make energy efficient buildings.
तो आइए देख लेते हैं कि ये शून्य रेटिंग आखिर है क्या इस छोटे से फिल्म के बारे में। शून्य, भारत के महान ज्योतिषवर गणितज्ञ आर्यभट्ट की सोच, जो पूरी दुनिया को चलाने के लिए एक बहुमूल्य खोज है। और इसी मूल्यवान शून्य में हम भारत की ऊर्जा दक्षता में विशेष योगदान दे रहे हैं। आज विश्व भर में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें भारत भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इसमें गतिशील रहने के लिए हमें ऊर्जा दक्ष होने की आवश्यकता है। विद्युत मंत्रालय और बीईई ने कमर्शियल बिल्डिंग स्टार रेटिंग योजना की शुरुआत की, जिसमें 5 स्टार लेवल वाली इमारतों को सबसे कुशल माना जाता है। इस योजना को बल देने के लिए शून्य लेवलिंग कार्यक्रम लॉन्च किया गया, जिसमें हम ऊर्जा दक्ष डिजाइन और बैकअप फीचर्स के साथ ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोतों को अपनाते हुए शून्य लेवल यानी नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग और शून्य पॉजिटिव यानी नेट पॉजिटिव एनर्जी बिल्डिंग कार्यक्रम के तहत निरंतर ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने हेतु प्रयासरत। भारत से एक नए कमिटमेंट और एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग में वे परिसर आते हैं जो अपनी जरूरत भर की बिजली उत्पादन करते हैं, और नेट जीरो पॉजिटिव एनर्जी बिल्डिंग अपनी जरूरत से अधिक बिजली उत्पादन करते हैं। वर्तमान में 100 कमर्शियल बिल्डिंग ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की मदद से इन नेट जीरो कार्यक्रमों के अंतर्गत शून्य ऊर्जा बिल्डिंग बन रही है, और भविष्य में इन्हें पर्यटन स्थलों और स्मार्ट सिटीज में भी लागू किया जाएगा। तो आइए हम भी इस अनोखे व सराहनीय शून्य लेवल कार्यक्रम को अपना देश के विकास में सहभागी और समाज के लिए आदर्श बने, ताकि आने वाले पीढ़ी ऊर्जा दक्ष और ऊर्जा निर्भर देश का उज्जवल भविष्य। बीईई ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, हमारा प्राण ऊर्जा संरक्षण। Sir, may I now request you to kindly release the guidebook on awareness generation on energy efficient buildings in thermal control. This will be a reference document to media persons in general to help them report responsibly on the issue of energy efficient in buildings. This will cover information on the design of energy efficient buildings, key features, important national, international policies, etc. माननीय, अब हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया क्लाउड बेस्ड डेटा एनालिटिकल टूल फॉर एसएमई को भी लॉन्च करें अपने कार्यक्रमों द्वारा। This tool has been designed to bring awareness and identify energy efficiency gaps and track the monitoring of key operating indicators. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, और आप देशवासियों को बहुत बहुत बधाई इन सौगातों के लिए। और अब हमारा आग्रह है जिस सेक्रेटरी आलोक कुमार, सेक्रेटरी पावर आपसे कि कृपया अपने पुरस्कार प्रकट करें। Honorable Union Power Minister Shri R.K. Singh Saab, Honorable Shri Krishna Pal ji, our respected Minister for Power and Electricity, Chairperson CEA, Director General Bureau of Efficiency, CMDs of our
CPSE, all our senior officers from Ministry of Power and other ministries, all the award winners, dear guests and all participants, और media members. Let me first extend my heartiest congratulations to all the award winners from this occasion. Today is a very special Energy Conservation Day. We are also celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav. This is a special celebration which will run for 2 years and to showcase what we have achieved in the last 75 years and also to plan and aspire what we are going to achieve when we turn 100 years of independence in 2047. So along with all other Government of India ministries, state governments, Ministry of Power is also celebrating this Azadi Ka Amrit Mahotsav, and this is a very special occasion for Ministry of Power. So this week has been a major event in which several events are taking place all across India, in villages, in hills, in cities, in schools. We are very proud of it. We are now talking of two things, the energy growth and energy transition simultaneously. Other countries who are talking of energy transition, they have almost reached saturation in their energy consumption. But India has a very challenging task. While we have to meet our growing needs, we also have to showcase and execute the energy transition we have planned. India has both major goals before it. Our electricity demand, which has just touched 200 gigawatt, will cross more than 340 gigawatt in a decade. Our installed capacity for electricity generation, which is now currently 392 gigawatt, will touch around 817 gigawatt in 10 years. We are generating around 1,500 billion units every year, whereas we will be generating more than 2,500 billion units by 2030. So this is only sector of electricity, but all our energy needs will also grow in the economy. So while we grow and we meet our energy demand, which is a rightful claim for India, we also have a challenge to meet energy transition that we grow responsibly. Under the able guidance of our Honorable Prime Minister and ably being led by our Union Minister Shri R.K. Singh, India has come out with flying colors. And we talked before the global community, India has done extremely well in terms of energy transition. And see, most of the savings in terms of the carbon dioxide emissions have happened for two initiatives: the energy conservation and renewable energy. And both these initiatives are being led by Shri R.K. Singh. He has both the ministries, so most of the efforts being made in terms of energy transition in India are being led by Shri R.K. Singh. And we are very fortunate that we are working with him and we are part of this story, this journey. India has successfully achieved much before time almost all its commitments which were made in COP21. The emission intensity which we have to reduce by 33% by 2030, we are already closing around 28%. And non-fossil fuel based installed capacity, which was supposed to be 40% by 2030, is already touching around close to 38-39%. And our non-fossil fuel based capacity is now more than 40%. Our Honorable Prime Minister has made even more challenging announcements recently in COP26. And again, in the Ministry of Power, we have been given two tasks to achieve. That is, emission intensity has to go down by 45% by 2030 as compared to 2005 levels. So not only 33%, we have to go down by 45%. And we have to avoid
1 billion tons of carbon dioxide in 10 years. So both these tasks are in fact challenging, but we are committed to achieve these tasks. So far, Bureau of Energy Efficiency has done an outstanding task in energy conservation, and I am informed that the mitigation in energy sector, half of it India has achieved through energy conservation. It's a great achievement. About 40 to 45% of the commercial energy is consumed by industries. So in that context, the iconic program of the Perform, Achieve and Trade, that program is a flagship program of Bureau of Energy Efficiency. It covers now more than 1,000 designated consumers, and it has saved more than 22 million tons oil equivalent. Similarly, Standard and Living program, every household uses an appliance, every industry uses appliances. So the efforts have resulted into 65 billion units of electricity saving because of the Standard and Living program. We have just now launched 2 more, the batteries and tires. The journey is continuing. In the LED sector, it's a spectacular success before the world. We have distributed more than 200 crore LED bulbs, and we have installed over 1.2 crore LED lights, and we are still not satisfied. We are working continuously. Going further, our new initiatives are penetration of electric mobility. We have launched Go Electric campaign. In the new program of Roshni, which we are going to launch for achieving the energy efficiency next decade, helping and facilitating MSMEs in energy efficiency will be the key intervention. We have laid very good foundation by taking a number of clusters, and we are going to now scale up. Similarly, India is going to urbanize very rapidly in the next 10-15 years, so it's a time to also catch up on residential sector of buildings, large group housing complexes. Those are 3 key areas. I would like to speak about, for a few seconds, about Gram Ujala, which was launched by our Honorable Minister in Varanasi and Ara around 4 or 5 months ago. It was a very important beginning, but this program has now been scaled up. India is going to distribute more than 1 crore bulbs in the next about 2 months in the rural areas of India. Earlier, all of the LED distribution was focused for the urban areas. It's a very unique scheme in which a bulb is given for only 10 rupees, which costs around 100 rupees. It's a good quality bulb. And balance cost is to be recovered through carbon credits. So those two have off to the Energy Efficient Services Limited and the RCSL. They have designed this program, and it has been now scaled up. It will see huge energy savings in rural households. Bureau of Energy Efficiency has taken several steps for awareness creation, capacity building. All of these achievements which we are seeing today, it is a result of sustained hard work over years by BE, by creating awareness and by building capacities in architects, in designers, and industries. So they have done a wonderful work, which they will continue, I am very sure. The present award ceremony is also one of the element of those efforts, because it creates a lot of awareness, it creates a spirit of competition. More than 400 applications were received, out of which the selected ones will be awarded today. One last thing before I close is the one very new thing which we have initiated this year is the awards for innovation. The established industries, they take energy efficiency for commercial reasons, and they compete and they achieve. It's a good thing. But there are a lot of youngsters, researchers, a lot of startups, a lot of our spirited scientists and professors. They are working for a lot of innovation in energy efficiency. So this year, Ministry Power will be felicitating those innovators who have been selected. My best wishes to them. Once again, my congratulations to all the award winners, and let us celebrate this Energy Conservation Day and Azadi Ka Amrit Mahotsav. Thank you very much. Thank you. The
बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ महोदय। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हर देशवासी आजादी का अमृत महोत्सव गर्व के साथ मना रहा है और आज विद्युत मंत्रालय एक ही दिन में 10 लाख LED बल्ब डिस्ट्रीब्यूट करने का पुण्य कार्य कर रहा है। हम आपको बता दें कि मंत्रालय ने मार्च में ही ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ किया था। ग्रामीण घरों में रोशनी बिखराने वाली इसी योजना की ही एक कड़ी है आज की ये पहल। लेकिन इसके पहले भी माननीय मंत्री जी इसे लॉन्च करें, कुछ और भी एक्टिविटीज हैं जिन्हें हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम आपको ये भी बता दें कि CESL 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में 2500 से ज्यादा गाँवों में 2 लाख ग्रामीण घरों को आज रोशन कर रहा है। माननीय कुछ संदेश हैं जिन्हें हम सुनना चाहेंगे। आपसे निवेदन है, अभी कुछ 2 संदेश जो है वो माननीय मंत्रीगण के आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम सुनना चाहेंगे माननीय श्री विजेंद्र प्रसाद यादव, मिनिस्टर ऑफ एनर्जी, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार का संदेश। तो पहले 2 संदेश सुन लेते हैं, उसके बाद आपके कर कमलों द्वारा ये शुभ कार्य किया जाएगा। देखिए, ऊर्जा की खपत को कम से कम करने से पर्यावरण पर भी असर होता है। तो इसीलिए बिजली बल्ब के माध्यम से ऊर्जा की खपत में कमी आती है, जिससे परिवार के लोगों को ऊर्जा के उपयोग करने में बचत भी होती है, साथ ही कार्य उत्सर्जन के में भी लाभ मिलता है कि ग्लोबल वार्मिंग पर इसका प्रभाव पड़ता है। अभी तक 17 लाख LED बल्ब जो है बिहार में बंटवारा हो चुका है। आगे आने वाले वक्त में और इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। 8-10 शहरों में इसका वितरण व्यापक पैमाने पर किया जा रहा है, लेकिन आगे आने वाले वक्तों में बिहार के हर घर में LED बल्ब लगे, यही कल्पना है, यही तमन्ना है। और इसी को आगे बढ़ाने के लिए कल जो दिवस है विद्युत खपत कम करने का दिवस 14 तारीख को जो ये कार्यक्रम होगा, मैं उसकी शुभकामना देता हूँ और एयरटेल कंपनी को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस काम में बड़ी तत्परता दिखाई, आगे भी तत्परता दिखाई। और आइए अब हम माननीय श्री वी सुनील कुमार, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का संदेश देते हैं। ಡಿಸೆಂಬರ್ 14 ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಡೇಯನ್ನ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಧನದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನದ ದಕ್ಷತೆಯ ಕುರಿತಂತೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಭಿಯಾನವನ್ನ ಮತ್ತು ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಧನದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅಭಿಯಾನವನ್ನ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅಭಿಯಾನವನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ ಆಶಯವನ್ನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಗ್ರಾಮ ಉಜಾಲ ಅಂತ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಯೋಜನೆ. ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದಂತಹ ಬಲ್ಬುಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿ LED ಬಲ್ಬುಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಅಭಿಯಾನವನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಬಲ್ಬುಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ನಾವು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬಲ್ಬುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ LED ಬಲ್ಬುಗಳನ್ನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆ. ಒಟ್ಟು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಂಧನದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಂಧನದ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕೈಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಗ್ರಾಮ ಉಜಾಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. तो अभी हमने 2 संदेश सुनी और अब हमारा आगे हम जो आते हैं माननीय श्री आरके सिंह जी, ऑनरेबल आपसे कि ग्राम उजाला डैशबोर्ड का शुभारंभ करके 10 लाख LED बल्ब को सिर्फ